Hello everyone. Today we are starting our chapter that's name is water resources. Dear student, as you all know that what's the meaning of resources, we have to be discussed in our early two chapters, that has to be development and resources, and wild and other resources we have to be discussed in chapter 2. In this chapter we have to be discussed about the water resources, that how can water is very important in our day-to-day life and how we can conserve it and how many parts of earth has to be covered by the water. So first we have to be discussed its introduction, that has to be given in our chapter. Water is the incomparable gift of nature. It means that we have to be got water from the nature directly. It's not the man-made resources, it is directly come from the nature, which provides space to all the activities on the earth. It means that we have to be do all the activities in our day-to-day life that has to be totally react with the water. It means कि हम जो भी activities अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं वो पानी से जुड़ी हुई होती हैं. Water resources is a primarily necessity for socio-economic development of any country. It means that every country has to be depend on the water resources for their socio-economic development. If we have no water in our country, then it is not possible for us that we have to be socio-economically developed country. In the ancient time, rivers values remain the places of development of human civilizations. It means that if we have to be go through the ancient civilization, which we have to be read out in our history portion of the previous classes as well as in our 10th class, that has to be shown that all the ancient civilization has to be established near the river valleys, where the rivers has to be go through. They have to be different kinds of civilization, just like Egypt है और जितनी भी civilization है आपकी हड़प्पा संस्कृति की हम बात करें, अगर सिंधु सभ्यता है, बहुत सारी सभ्यताएं हैं, अगर उनको हम बात करें तो जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे ही डेवलप्ड हुई हैं. Water constitutes 71% and land constitutes 29% of total surface of the earth. If we are talking about the earth portion, कि कितने पोर्शन पे जो है वाटर कंस्टिट्यूट करता है और कितने पे जो है धरती हमारे अर्थ के ऊपर है, तो वी हैव टू बी टेकन आइडियाज दैट 71% has to be constitutes water on the earth, and there will be only 29% has to be total surface of the earth. Out of the total water resources available on the earth, कि अर्थ के ऊपर जितना भी water resources available हैं, there 97% of this water exists in the form of saline water. तो उसका 97% जो है वो saline water है, यानी नमकीन पानी है in the ocean, and the remaining 3% is usable fresh water, and only 3% water has to be usable as a fresh water. If we are talking out of this usable water, अगर हम 3% वाटर की बात करते हैं जो कि यूजेबल है हमारे लिए, उसका 69% वाटर इज रिमेन्स इन आइस, यानी 3% का अगर हम 69% निकाल देते हैं तो वो आइस फॉर्म में अवेलेबल है, एंड 30% इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. और 69 के बाद अगर हम बात करते हैं दैन 30% इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर दैट हैज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस दैट वी हैव टू बी यूज इट, एंड द रिमेनिंग ओनली 1% ऑफ वाटर इज यूज बाय मैन फॉर ड्रिंकिंग. इट मीन्स दैट वी हैव टू बी टेक ओनली 1% वाटर फॉर द ह्यूमन बींग फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, इरीगेशन एंड अदर इकोनॉमिक activities. It means that we have to be take a very little part of the whole water that has to be present on the earth in our economic activities. According to इधर आपको यहाँ जो है कंडीशंस ऑफ यूजेबल वाटर्स भी आपको शो ऑफ किया गया है कि अंडरग्राउंड वाटर कितना है, वाटर ट्रैप ऑफ ग्लैम्स कितना है, अदर्स किस में यूज़ किया जाता है. इट मीन्स जो टोटल वाटर है उसका सिर्फ हम 1% वाटर ही अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं. यूजिंग अकॉर्डिंग टू द वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर हम वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें, अवेलेबिलिटी ऑफ टोटल यूजेबल वाटर इन इंडिया इन 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर, आउट ऑफ विच only 1123 billion cubic meter is used. It means that we have to be 1869 billion cubic meter जो water है वो available है, but we have to be use only 1123 billion cubic meter is used. Out of this, human consumable water 690 billion cubic meter is a part of surface water, and 4333 million cubic meter इज़ अ पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. इट मीन्स कि बहुत सारा पानी ऐसा है जो हम तक नहीं पहुंच रहा है. हम कह सकते हैं कि या तो वो आइस फॉर्म में अवेलेबल है या फिर अंडरग्राउंड वाटर के रूप में पाया जाता है. टोटल नीड ऑफ वाटर इन इंडिया
इन द ईयर 2000, अगर हम 2000 में भारत में जितने पानी की ज़रूरत थी अगर हम उसकी बात करें तो वो 634 मिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर था. इट विल रेज टू 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर बाय द ईयर 2025. लेकिन अगर हम देखें कि 2025 तक की जो रिक्वायरमेंट है ये कितनी हो जाएगी, तो इट्स जस्ट वी कैन से दैट डबल 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी. द प्रॉपर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर हैज़ बिकम एसेंशियल ड्यू टू द प्रेशर on the water resources because of the rapid growth in the population and global warming. If we are talking that why we are manage and conserve the water resources, so it has to be rapid growth in the population, has to be increase the need of water in our day-to-day life. So we have to be control the rapid growth and the global warming. Then water management is our next topic in this chapter. The water management, that how we can manage the water that has to be used by the peoples on the earth. On one side, due to increase in the size of human population, modern lifestyle and non-scientific use of water have raised by pressure on water resources. One side, due to increase in the size of human population, कि जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि human population का size जो बढ़ रहा है, increase हो रहा है, modern lifestyle हो रही है हमारी, एंड नॉन साइंटिफिक यूज़ ऑफ वाटर हैव रेज द प्रेशर ऑन द वाटर रिसोर्सेज, कि जिस तरह से हम वाटर को यूज़ कर रहे हैं विदाउट एनी रीज़न वी कैन यूज़ द वाटर, इट हैज़ टू बी गिव अ ग्रेटर प्रेशर ऑन द वाटर रिसोर्सेज. ये वाटर रिसोर्सेज के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं. ऑन द अदर साइड, द मैक्सिमम amount of rainwater reaches to the oceans through surface flow by river without its proper utilization. और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो बारिश का पानी होता है उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं और वो वापस जाकर ओशंस में मिल जाता है. इन दिस सिचुएशन इट इज़ अ डायर नीड. तो अगर हम ये स्थिति को देख रहे हैं तो ये हमारी एक डायर नीड बन जाती है ऑफ द टाइम, समय की नीड बन जाती है टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ वाटर बाय अडॉप्टिंग वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स, कि हम वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स को अडॉप्ट करें और वाटर को मैनेज करें. In this direction, it is the first requirement to the manage rainwater. The proper utilization of this water is essential in order to meet the needs of the growing population, and its management is essential in order to tackle the consequences.